All right. Hello, good morning. So hi everybody. आज हम लोग गोल्ड को बैकटेस्ट करने वाले हैं अभी के लिए. गोल्ड की एक बहुत अच्छी एंट्री थी मॉर्निंग अराउंड 10:30 AM इवन प्री लंदन. वहाँ से गोल्ड बहुत अच्छा स्पाइक ऊपर दिया है. दैट इज लाइक 130 140 पिप्स. बट अपन वो एंट्री ले नहीं पाए. आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स. आई वाज अवे फ्रॉम माय ऑफिस. तो ऐसा करते हैं, बिकॉज वी हैव मिस्ड दैट एंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू जंप ऑन टू एनी अदर एंट्रीज राइट नाउ. हमने अपने ईवैल अकाउंट में एक माइक्रो एंट्री लेके छोड़ रखा है, एंड आई एम ट्राइंग टू होल्ड दैट. मतलब स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ढंग का है. मतलब ऐसा है कि स्टॉप लॉस अगर बड़ा भी रखे तो अपने को लॉस वैसा कुछ खास होने वाला नहीं है. जस्ट टू टेस्ट समथिंग आउट. जब आप एक्चुअल एंट्रीज लेते हो तो आपको रिमेंबर ज़्यादा रहता है कि आपने क्या गलती की थी. तो मैंने एक माइक्रो एंट्री एक्चुअल एंट्री अपने ईवैल अकाउंट पे ले रखी है. देखते हैं कैसा होता है. गोल्ड एक मिनी रेजिस्टेंस जोन पे है फिलहाल के लिए. जो 8 बजे का टॉप बना था हमारा गोल्ड का 3027.284 का, वहीं पे है अभी गोल्ड. वहीं पे प्ले कर रहा है. लंदन सेशन ऑलरेडी ओपन है. देखते हैं क्या यहाँ से रोल प्ले होता है. आई वुड बिलीव गोल्ड शुड गो अपवर्ड्स ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी. ये मुझे बुलिश ही लग रहा है, बिकॉज ये डबल बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर ही जाना चाह रहा है. एंड ऑन अ 4 आवर कैंडल, दिस इज अ प्रीटी बिग 4 आवर कैंडल, प्रीटी बुलिश 4 आवर कैंडल. दैट इज व्हाट आई थिंक कि ये ऊपर ही जाना चाहिए. तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग अपने पीए अकाउंट पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं. आई एम जस्ट वाचिंग इट. और अभी के लिए अपन टेस्ट करेंगे, गोल्ड को बैक टेस्ट करेंगे. तो ऐसा है कि वी हैव स्टार्टेड विथ अ कैपिटल ऑफ 2241 टुडे. एंड लास्ट बैक टेस्टिंग सेशन में हमारा प्रॉफिट $240 था, विच इज गुड 10%. Let's see what can we do today, what can we make today. I'm going to delete all of this previous stuff. ये अपना अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, but for immediate support levels I'll mark it here. अब देखते हैं. अभी बज रहे हैं 11:40. so we are on the London session open. On a 4 hour time frame हमें ये दिख रहा है gold is in a bullish trend, so a secondary trend. Gold is trying to make a miniature double bottom here and wants to go upwards. So our immediate resistance zones are 2 of them. So first one is here, other one is here. upwards momentum है तो यहाँ पे short करने का try अपन करेंगे कि नहीं करें. So let's wait for other good candles to be formed and we'll see. अभी कैसा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और खुद को ही बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे है ना, बट ये आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है. फुल टैप दैट फेयर वैल्यू गैप एंड वेंट डाउन. तो हमें क्या लगेगा, बहुत बार जो मैंने पिछली बार गलती की है, मुझे लगता है कि यार यहाँ तक आ गए, ये तो देखे नहीं थे अपने, पर मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक कम से कम 10 पिप्स तो मिल ही रहा है. ये तो शॉर्ट ही है, इसे तो ले ही लेते हैं. द मोमेंट यू एंटर हियर इट विल प्रूव यू रॉन्ग. मतलब चलती फिरती खेती थोड़ी है यार, कहीं से भी आए कभी भी आए कुछ भी ट्रेड ले लिया, लगा कि ये तो हो ही जाएगा. ऐसा होता तो बात ही क्या थी. तो यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू ट्रेड्स विच यू मिस्ड द एंट्रीज. एंट्रीज आपकी गुड होंगी तभी R2R अच्छा होगा, एंड R2R मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा. तो लेट्स वेट फॉर अनदर एंट्री. अभी अपना बिकॉज इज अ वाइड रेंज कैंडल, अपने को एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ मिल सकता है अगर ये सस्टेन किया ऐसे. तो let's see, थोड़ा स्लो रखते हैं ऐसे. can you be at like 3x? there is no 3x, there is only 2 and 5. कोई बात नहीं. alright, we might see an entry here. that was not a good entry. अच्छा वो entry हमने नहीं लिया. alright, we are falling down now. so this is the 4 hour time frame जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि this is falling. 1 hour पे देखते हैं क्या हो रहा है. एक्चुअल प्राइस, लाइव गोल्ड प्राइसेस, अभी गोल्ड अपने रेजिस्टेंस, द लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस ही ले रहा है. ऑलराइट, तो वी आर फॉलोइंग काइंड ऑफ दिस फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगेन, जिसके बारे में हमने कल बात की थी. एंड दैट वर्कड आउट ब्यूटीफुली. इफ यू सॉ, उसने लोअर ट्रेंड लाइन को टैप किया एंड स्ट्रेट अवे मूव्ड अप 150 पॉइंट्स. सो कल का हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा रहा.
कल हमने अच्छे पैसे बनाए। अब देखते हैं आज क्या होता है। अभी के लिए हमने ट्रेड मिस किया तो हम नहीं लेंगे, वी जस्ट वेटिंग फॉर इट टू इधर ब्रेक upwards and hold so that we can take 60-70 pips on the upside because yep, अगर ये होल्ड करता है तो वी आर गोइंग टू टेक लाइक 60 pips। सी घूमने देते हैं अभी इसके। For the time being this is a double bottom right now but this is a very good candle here। अब अगर यहाँ से मुझे तो लगता है कि ये नीचे जा सकता है, ये सब कुछ को ये प्रूव करता है क्योंकि एक भी ये ऊपर ब्रेक नहीं दे रहा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक भी सस्टेन नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी। Will you go down to the station and get me a ticket on the 11 o'clock? Just excited. ऑलराइट, सो जूम आउट करके अगर देखें अपन तो अपने को ये दिख रहा है कि कम से कम यहाँ तक तो ये जा ही रहा है। फॉर दिस लेट्स सी। यार मैं कुछ करने बैठता हूँ तो यार फिर फोन आता है इरिटेट। ऑलराइट, मोर ऑफ अ डबल बॉटम का ट्रेंड अप साइड मूव दे रहा है। ये कैंडल सस्टेन करता है तो अपने एंट्री देख सकते हैं, देखते हैं। Alright, that's a good sustainable entry. I'm going to take a buy right here. SL, I'm going to keep my SL here and I'm going to take my profit for this neckline. Actually here. See? Alright, that was a good target. We made few dollars here. Alright. अब ये नेकलाइन तक तो जा चुका है, अब ये इसे ब्रेक भी कर रहा है। अगर ये होल्ड करता है तो इट्स गोइंग टू शूट अपवर्ड्स। स्टिल इन द सेशन, लेट्स सी। राइट, दैट्स negative candle. We are going to see a follow through candle. Yes, again a double bottom here. Now if you see on the 4 hour 1 hour, ये ऊपर जाके भी नीचे तुरंत वापस आ गया, did not close up, so we cannot take that as our usual entries. Alright, देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल क्या बना रहा है, ये ब्रेक ही कर रहा है क्या? Okay, tap that liquidity here. So we have tapped that liquidity. Yep, that was something I was not interested to take anyways because this was already double bottom for me. Now this has a lesser space of a double bottom. इसके पास ही white space था, यहाँ पे हमारा स्पेस बहुत कम था और स्ट्रेट अवे कैंडल्स, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स गिर रही थी तो ये लेने का सेंस नहीं बन रहा था। तो अब नेक्स्ट दिख रहा है हमें जो, वो एक तो यहाँ पे है जो कि ये आपको ये विक्स दिख रहा है, दूसरा अपन यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे जा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी इम्पल्सिव ट्रेड्स हियर क्योंकि मैं अगर एक्चुअली ले रहा होता तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लेता। डिड वी टच दैट विक? नो वी हैवंट।
All right, we're going down now. This is a support region here. If we see this, this is where I took a support because this is a really good upwards movement. यहाँ पर से एक upward movement हमें वापस दिख सकता है. Confirmation candles का वेट करेंगे. Tapped. We have tapped that. Are we going to get a good confirmation candle? We do not. That looks like a good confirmation candle. I'm going to take a buy here. Engulfing, bullish engulfing candle, SL below this. Going to take a good TP out here. I would expect at least here. Let's see. We're going to hit T loss. Yes, we're going to hit our stop loss. Why did it not work out is what I am interested in right now. टाइमिंग ठीक थी हमारा, हम लंदन सेशन में थे. यहाँ एक सपोर्ट जोन था जो पहले टैप नहीं हुआ था बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है. We did not tap that. Now our next support zone first of all is here. This is where I will be interested to take some buys. Alright, first, second of all, move sideways, lower ही बन रहा था because it was not breaking any highs. Break of structure भी हमें यहाँ पे मिल गया है, तो ये एक अच्छा सेल एंट्री यहाँ पे हो सकता था हमारा बिकॉज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. इसने वापस एक बुलिश टॉप बनाया, वापस नीचे जा रहा है. तो दैट इज व्हाट स्मार्ट मनी यूजुअली डज. आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास अगर एक भी बुलिश कैंडल नहीं बनता है और फिर वो स्ट्रेट अवे गिरता है तो उसको एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन नहीं बोलते हैं, जो मैंने बहुत रिसेंटली सीखा है पर टेस्ट नहीं किया है. तो जो सीखा है उसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं मानेंगे कि वो सच है. We have the session indicators. Alright, चलो देखते हैं नेक्स्ट ये क्या करना चाहता है. We have just tapped the lower side of this like liquidity trap. अगर कर रहे हैं अपन तो अपने टैप कर चुके हैं. This is a more of a double bottom concept यहाँ बन तो रहा है. Good candle. I am going to take a buy here. Good bullish candle. Taken the liquidity out here, and this should give us some good profits. So I'm going to take that. I'm going to take it here at the least 1:2 risk to reward. Let's see. Halfway through our profits. Okay, London session closed. We're going to see some choppy movements here. See if we enter London के बाद न्यूयॉर्क अगर घुस गए और ये टैप नहीं किया तो फिर ये नीचे मार देगा एक बार. Right. About to enter our New York session. Okay, we are in the New York session now. Yep. This is what New York does usually. ये नीचे जाता ही जाना था. Did not work out for us. We have eliminated that profit and we have come into some loss now. Alright, not a problem. Let's go ahead. तो अगर लंदन सेशन क्लोज होने तक यहाँ पे एक सीख ये मिला है हमें.
I am going to wait for this to touch. What did you do? Where is the opening? This is the opening. Alright. देखते हैं. We're tapping that. We have not yet tapped. इसको slow करेंगे. Entry ढूंढेंगे यहाँ पे. I would want to take an entry right here. बिकॉज हम लोगों ने सपोर्ट लेवल को टैप कर दिया है. एक स्पाइक नीचे से बाइंग प्रेशर दिखा है हमें. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टेक दिस ट्रेड. अभी SL 254. लेट्स कीप द इमीडिएट SL हियर. लेट्स सी. ये जरूर लिखूंगा. Trade taken without confirmation will always hit here. This did not work out. You close there again. It has closed. Next support zone is here. एक बार 4 आवर का टाइम फ्रेम भी देखेंगे यार. Yes, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट सपोर्ट इज हियर और इधर हियर. Just wait for it to come down there. Did we tap this and we're going back? No, we haven't yet. अभी कैसा है कि एक अच्छा कैंडल तो बना है but not for me. Now this is a good candle. Now this is a good buying option. Keeping my SL below the last previous candle low. Going for at least this much of a target. Let's see. What mistake did we do here? $2250 एक्चुअली 25 मिनट के आसपास से हम अपना कैपिटल आधा कर चुके हैं. तो what we think is not working out for us. Shouldn't have waited even more, but this was a good confirmation. Let's see अभी क्या है. हाँ, गलती यही थी कि न्यूयॉर्क सेशन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है तो कैंडल लोज का स्वीप मारता ही है ये. algos न्यूयॉर्क loves to sweep liquidities before doing anything. Going down and down and down and down. Look at that. Look at that. All right. Oh, one good thing that I see here is that we have drawn previously the trend line support here. So we are tapping that. See. All right. That was a really good short trade. Outside our range, almost outside our range. 4 आवर पे तो कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे क्यों उठ रहा है. लिक्विडिटी टैप भी हो सकता है. मेकिंग अ डबल बॉटम हियर. नेकलाइन यहाँ पे है. यहाँ से रेजिस्टेंस वापस ले सकता है. आई शुड हैव टेकन अ ट्रेड राइट हियर. लेट्स सी. ओके. Now that is a good candle actually. Why is a good candle? A minor double bottom, a minor retracement trying to go back out with a good bullish candle. That is why I would. Sorry, I need to buy this. Yes, I'm going to take a strict SL here. Here actually. And I'm going to take my TP right somewhere around here. Yep. Oh, it is now dry. It is dry now. That is a good bullish candle again. Okay, I am going to keep this break even to preserve our capital here. Alright, I'm going to keep my SL somewhere here now. Okay, alright.
ये टाइमिंग ऐसी है कि यहाँ पे आप बैठोगे ना ट्रेड करने के लिए, तो फिर फास्ट फॉरवर्ड आता है. Now just after we trailed our SL to this point, it tapped it and look at that bullish candle. Okay, alright. I see that on the live charts, gold is now trying to break that resistance, that low resistance, and could go upwards. I see I have a good entry. I'll just take that entry and come back here. Micro option, yes. Set stop through it here. That's a big sell and stop. Hoping for what is just a moment. So yes, that is what we are trying to aim for. This last candle low. Yep, looks fine. We'll wait for that. All right, we have taken gold entry here because we see a breakout with a good bullish move. 4 पिप 40 पिप्स के लिए प्रॉफिट है हमारा, 20 पिप लगभग हमारा स्टॉप लॉस है. बोनस टू टूरिस्ट रिवॉर्ड के साथ. चलिए वो ट्रेड ले लिया है हमने, उसको हम लोग को झेलने का कुछ नहीं ज़रूरत है. चल रहा है तो चलने देते हैं उसको. यहाँ ध्यान देते हैं. सो फास्ट फॉरवर्डिंग दैट, फास्ट फॉरवर्ड 5 मिनट तब जाके जल्दी देखा. यहाँ पे गलती की थी हमने. trade give EP Excel hit. एक कीबोर्ड कस्टमर में टाइम लगेगा. Okay, market open of the Asian session, kind of making a double bottom here on the 1 hour time frame. Sweet. Moving up. So we have tapped the previous close zone. I mean, not that we are moving up. Asian session is looking to buy. I'm going to buy here. SL is way too far. No, SL is good. Take my TP right here. Bad R2R. Bad. I'm going to keep this here. Now we have a good R2R. Alright, let's see. Halfway through the profits to जा चुके थे, so I'm going to track this here. Preserving capital. Almost SL it. And after our SL was it, our target was given. Not yet. Now it was.
Alright, let's wait for the London session to open. We are degrading our capital as of now. There's a good double bottom which we are just seeing buys and buys and buys. We could have captured that. इतना सुबह से उठ के तो मैं एंट्री नहीं ले रहा होता, ये लंदन सेशन का ही वेट करते हैं. Something that I would want to see here is this upwards momentum है. अब अगर गिरेगा तो यहीं से गिरेगा. गिरा, ब्रेक दे रहा है. Are you giving a break? Are you giving a break? Yes, so we are taking a 0.618 resistance, taking a sell here, a sell here, take profit here, sell actually here. Okay, let's go. Took a take profit. So we bounced back from the 61.8618 levels. Still bouncing back because it might bounce back till here and before going up. Let's see. Let the London open. So we tapped that and we're going back up. We have opened. The trend is positive for today. However, I've been going down and down and down and down. So if we take this from the move that was started, we are still to go here. 1845. एक प्रॉपर एंट्री ढूंढते हैं यहाँ पे. अभी तो नहीं मिल रहा कुछ हमें प्रॉपर एंट्री. हाँ, मार्क करने के लिए ये मार्क कर सकते हैं कि in the short run this is our zone from where the buying started. This is our resistance zone. We'll see what happens. Tap that resistance zone, making a candle. Are we making good? That was एक 1 minute टाइम फ्रेम पे देखते हैं ये क्या बना है यहाँ पे. ये वापस अगर यहाँ टैप करके नीचे का कैंडल देता है 1 minute टाइम फ्रेम पे तो फिर लुक फॉर एंट्री. Did not do that. Straight away went down. Alright, going back to the 5 minutes again. Let's see. Interesting. तो ऊपर जाने के लिए हमने 1 2 3 4 बार ये टैप कर चुका है हमने. अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो रहा है. चौथा टैप में सीधा नीचे ही गया है. भाई बड़ो कहीं तो जाओ. Okay, we're breaking that and going below. That is a double top, minor double top here. Picked. SL बहुत बड़ा हो जाएगा अब लेने के लिए. All right, see a good bounce here. SL is way too big, but the reward is also big. If we take this SL, the reward is 3.7. This is 4.4 actually. Yes, good. Let's see. Let's to reward. What यहाँ कोई न्यूज़ आया था for sure. Yep, this was the news that did that. Any which ways, I am not going to play around with that. Keeping my thing here. Alright, we got a good move upwards. We got a target hit. We are back to square one now. तो हमने कितने ट्रेड्स लिए क्या हम देख सकते हैं. इनिशियल बैलेंस तो जो भी था वो था ही.
Okay, we had NFP today. Okay. Straight gap up दिया था कहीं trade. नहीं देख सकते. But कुछ ट्रेड्स लेने के बाद ये समझ में आ रहा है हमें कि हम ब्रेक इवन पर हैं. हमने पहला जो एंट्री लिया था वो अच्छा था. We made more like 7-8%. बट हमने लॉस किया उसको. हमने अपना कैपिटल को आधा किया और उसके बाद फिर से वापस यहाँ पे आ गए. राइट. This is news, so news does things. Okay. If what was the NFP though? 7 p.m. right? Previous forecast actual, so bad news. Good news for gold actually. So what I was trying to do here is I wanted to measure this candle. एक दूसरा कैंडल का होप कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे पुश ले सकता है. ये took a push. Going to buy this. Keeping my SL tight. Because ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है. यहाँ 1 मिनट पे भी जा सकते हैं अपन. Yes, it's a risky trade. Are we seeing good? Okay, alright, let's see. थोड़ा धीरे करते हैं. Okay, halfway through our profits. Going to keep this here. Minimizing my loss, and it hit, and it hit again. No. So before the actual good entry, we bounced. Can we go back to this? Alright, so मैंने क्या ट्रेड लिया था यहाँ पे और पीछे चलते हैं थोड़ा. तो फिर यहाँ जा सकते हैं. रुकिए एक सेकेंड. आप कंफर्म कर दो भाई. डिलीट ऑर्डर. ठीक है. Alright, so this is where we have come to our order now. तो हमने ये ट्रेड लिया था. एक गुड बाउंस था कैंडल का. यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे अपना एसएल को रखा था बिकॉज हमें गुड बुलिश कैंडल मिला था और नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप का जो कैंडल दिख रहा था वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट था. ठीक है, आगे चलते हैं. इसने आधा टेक प्रॉफिट हमें दिया था यहाँ पे. तो हमें ये करना चाहिए था कि हमें इसे यहीं रख लेना चाहिए था, बट हमने नहीं रखा. हमने क्या किया, हमने इसे यहाँ रखा. अब इसने क्या किया, ये यहाँ से गुड अपवर्ड्स मूव दे रहा था. ये वापस नीचे आया और इसने इसे तोड़ा. ऑलराइट, इसने फिर से 61.8 को टैप किया. यहाँ पे आप देखो, इसे देखो आप. ये बंद करता हूँ मैं, अब समझ में आएगा. इसने 618 को टैप किया है, हल्का सा नीचे गया है. तो यहाँ पे जो हमारा स्पाइक्स था उसको उसने टैप किया है, जो कि हमारे यहाँ पे कंसोलिडेशन था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे. 5 मिनट पे क्या दिखता है, 5 मिनट पे एक फेयर वैल्यू आपको इसने टैप किया है. अब हमें यहाँ बाय लेना चाहिए था. हमने नहीं लिया तो अभी भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने आगे का देख लिया. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल ट्रेड. तो एक चीज मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, जो ट्रेड टेकन आफ्टर NFT is released, trade went things to note. Unexpected and better. So I think अब बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे क्या दिखता है हमें, बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है वी शेप्ड रिकवरी दिखती है हमें.
हमारे टैप जोन से इसने लिक्विडिटी स्वीप लिया यहाँ पे। इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, बट दिस इज अ वेरी वीक फेयर वैल्यू गैप। बॉडी इसकी भी आधी अंदर है, इसकी भी आधी अंदर है, मेन बॉडी को टच नहीं किया है इसने भी और इसने भी, तो इससे फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बोल सकते अपने बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए हमने इसका ट्रेड लिया। बट ये 0.6 से रिवर्स किया, विच वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। द बुलिश मोमेंटम दैट आई सी, आई थिंक द नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो यहाँ रहना चाहिए। पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ। ये हमने क्यों बना रखा है मुझे पता। डिलीट दैट। Daily candle is the Marubozu candle, huge Marubozu candle. अब हमें मोमेंटम बुलिश दिख रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से स्ट्रेट अब जाने का मोमेंटम, ऐसा मोमेंटम दिख रहा है। बज गए हैं रात के 8:30। We'll go back to 1 hour first here. Alright, so bullish, tapping the sellers, huge Marubozu on the 1 hour. Because of the NFP news, a lot of confidence coming in here. The next resistance is right here. Do we see that here on this candle? See that on this candle? Strange. Okay, alright. 5-1, 5. Nope. I'm trying to look for a trade here actually. If I take a, can we take a 0.1? We can. Take that buy because riskier trades for risky profits. Keeping this here for this bad. We're taking 1/10 of our position now, so I'll just see if that works for us. Dry time आ चुका है गोल्ड का. You might see profit booking going to this actually. अब ठीक है, लूज करते भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता. Alright, almost at profit, so I'm going to take that profit. Why waste it? Alright, this is where I would have trailed it. अब स्टॉप लॉस खाते भी हैं तो खाते हैं. चलो ठीक है, good. Oh, we came to our resistance zone. Gold is working beautifully. We on the smaller trade that we took, we are 40 pips in profit right now. And that calculates to $80 because we took 2 micro lots.